Don't you think it's astounding that our planet supports 7 billion of us? And counting. Learning to survive in a crowded world is our biggest challenge. But there's one corner where we're already well on our way to adapting. Welcome to India. Over 1 in 6 in the world live here. And to make ends meet, more of us are moving to the city than anywhere else on Earth. We're resourceful, steal jobs, and highly resilient. It's just as well. We need all our ingenuity to create a space we can call home. If you want to know how to succeed in this new, unchecked urban world, come and take a look over here. Who doesn't like gold? We'll show you how, no matter how dense the crowd, we can carve out a home and build our future. Come and meet a 23-year-old guy who's come to the mega city of Kolkata looking to make it big. Imran is known to everyone as Kale and lives in this crumbling house in the heart of the city's jewelry making district. ये सोना का दुकान है, इधर हम सोना वोना बेचता है, सब लोग खरीदार लोग रहता है इधर, सब सोना वोना खरीदता है, आओ अपना कमरा दिखाते हैं। Kale has come here in search of gold, and he's not the only one. ये मेरा कमरा है, यहाँ 15-20 आदमी रहता है अभी। खाता पीता संग में हंसी मजाक हम लोग संग में करता है। कभी थोड़ा ड्रिंक भी कर लेता है, बियर भी पी के आया था, चूड़ेबाजी भी कर लेता है। लड़का लोग रहता है, आगरा का आया हुआ, हम लोगों का हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता है इधर। हमारे आपस में हम लोग मिलजुल के रहते हैं। घर वालों को भी ऐसा नहीं होता कि कोई है कि नहीं है, अच्छा लगता है हम लोगों को। This old district is crammed with over 800 workshops where goldsmiths create the original Indian bling. Gold jewelry has long been the must-have adornment for Indian women and doubles up as an instant emergency fund. It's our insurance policy, but far better to look at. If you add it all together, Indian housewives hold 11% of the globe's gold stocks. That's more than the reserves of the US, Germany, Switzerland, and the IMF put together. With nighttime temperatures regularly over 30 degrees C, Kale and his friends prefer the street to their stifling room. He and his closest colleagues get up at 3 to work, while the city briefly sleeps. इसमें बंगाली लोग काम हम तो कुछ नहीं करता, इसमें कपड़ा धोता है, नहाता है, दिन में गर्मी लगता है, दोपहरिया में हाथ धोने आता है, मुंह धोता है, पूरा ही धोता है, सब माल जो होता है ना हाथ पे चिपका रहता है। सोने का तो घिस होता है जो सोने लोग कम करता है, वो सब यही धुल के नीचे गिर जाता है। ये लोग यहीं का ही आदमी नहाता है और अभी भी देखो रात में 3 बजे नहा रहा है, थोड़ा पागल भी है साला ये रास्ता में इधर सब लोग आम आदमी चलता है, तो रास्ते में उनको लोग को कूड़ा कूड़ा दिखता है, कुछ मालूम नहीं रहता, और इसमें कुत्ता का टट्टी वट्टी का आदमी को लगता है और हम लोगों को मालूम है इसमें क्या निकल सकता है। Kale and his fellow gold sweepers have an agreement allocating them a couple of streets each to scour for particles of gold. The first step after sweeping is this traditional gold rush technique. ये जितना ही मट्टी जो पलटा लगा रहा है, ये जितना भी ये फालतू मट्टी से फेंक दे रहा है, ये माल है जो घुमा रहा है, ये मेरा दोस्त, वो उसका माल अंदर बैठ गया था सब टल्ली में। देखिए सोना, ये देखो कितना रेक डेमर है। ये मेरा चेक है, ये मेरा पेन है। जब भी मुझे पैसे का ज़रूरत होता है तो हम इसको रास्ता में चलाता है, ये नहीं मालूम होता इसमें कितने का चेक होगा कितने का नहीं, ये बिल्कुल नहीं मालूम है। The most closely guarded part of Kale's alchemy
is carried out on the roof above his room. Now, if you want to know how to make gold out of dirt, listen up. Take 1 bowl of sweepings, reduced to a fine silt by panning. Add a good slug of nitric acid before putting on the heat for just a few seconds. देखो ये पारा है, इसको डालेगा, इसको लपेटेगा हम सोना को, देखोगे तुम. Next, give the acid and mercury a thorough mix with your hand. देख लो हाथ, देख लो, दिखा हाथ दिखा. वो हाथ इसका जो है ठीक हो जाएगा भी रगड़ने से, जो खाल होता नहीं है, खाल इसका पतला वाला. लगेगा क्या रोज का काम है? हम लोग का रोज का काम है, नहीं हो सकता ऐसा कुछ. Once the mercury has attracted all the gold, remove it from the pan. को भट्टी ये पकाएगा, इसको देखो कैसा हो जाएगा ये. सही कर इसको. And return to the heat to boil off the mercury. घुमाने के बाद सोना एकदम सफा हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है. सोना दिखागा फिर. एकदम गोल्ड है ये, पक्का सोना एकदम. ये देखो लाल. अभी तो हम लोग का आदमी है, बहुत बहुत लाखों करोड़पति भी आदमी है. अभी तो हम छोटा सा आदमी, हम भी चाहता है बहुत बड़ा आदमी बने. Kale's room is controlled by one man, now Garda. He's recruited the banners for their specialist skills, learnt in their home city of Agra, 700 miles away. हम लोग सोना वोना उसको बेचता है, कमरा भी इसका है. मैं 200 रुपये एक लड़का करके देता है. जब पैसा लेगा तो माल भी इसको ही देना पड़ेगा. भाव बता रहे क्या भाव? 1500 का भाव लगाया. इधर करो यार, 1500 का भाव लगाया. सोना खराब हो गया, 400 रुपये का हुआ. जाओ ठीक से लाओ. हाँ ठीक करो अच्छा से. सही है सही है. Kale is not the only banner frustrated with the price he's getting for his gold. मेरा बाप मेरा यार, तू तो यार दुनिया जानती है. इसमें ईमानदारी की रोटी खाता हूँ. मैं मिला हूँ क्या? इतनी बड़ी बड़ी यात्रा जिंदगी में कुछ तो मिला हूँ तो है नहीं हूँ मैं. क्या मांग रहा है? मुझसे मांग रही हूँ. चोरी की आदत नहीं है रईसों में. Many of the banners are resigned to their position under Naukada, but Kale has bigger ambitions. नौकदा बहुत कड़क आदमी है. हम लोग आता जाता है, सब चीज़ के बारे में देखभाल करता है. ज़्यादा देर में आता है, पूछता कहाँ गया था, किधर गया था. इस मारे हम अपना अलग घर लेगा तो अपना खुल के काम कर सकेगा. इसके मारे कुछ कर नहीं सकता, अपना अलग ही रहेगा इसी मारे. With 1.2 billion of us here, all looking to make the best possible livelihood, you've got to be very canny at finding your niche ahead of anyone else. And that can mean looking in the most unlikely of places. Take Versova Beach on the northern edge of Mumbai. This barren strip of sand hardly suggests big opportunity. But 50 years ago, new arrivals from Rajasthan made a surprising discovery. This is the perfectly washed, and this is the water. Anil's grandfather realized that fresh water on a beach made it perfect for growing the desert crops from back home. It is a sweet water, you know. Sea is a salty, and this is sweet. The sand-loving bittersweet vegetable fenugreek, known as methi, immediately flourished, growing its tasty sprouts in just 3 days. A solid family business was born. I really appreciate my grandfather because he gave me this business. Indian people, they love the fenugreeks because it is good for health, good for diabetes and pregnant women. Today, there are 32 methi farmers here, many with 4 or 5 employees, and they've been granted a license to cultivate this municipal beach. Others have followed, providing services to the growing community. But the houses these recent arrivals have built on the sand are illegal. Father to one of the 40 families calling the beach their home is Rajesh. I'm the great person who stays next to the sea. This is my small beach apartment. Come inside, I will show you.
He came here after falling for his wife, Savita. खाना बना रही हूँ, मेथी मेथी, आपको खानी है। One day it was very nice day for me. I saw this girl, then I thought in my mind that I will marry with this girl only. अब मैं थोड़ा एसी ऑन करती हूँ, हाँ हमारा। This is my daughter. My dream is that my daughter will become a doctor. 4-year-old Vaishnavi has an 8-year-old brother, Harsh. They've both been brought up on the beach, unlike their father who grew up in his well-to-do parents' apartment. But then, he fell in love. उसके पापा को लव मैरिज पसंद नहीं है। My father told, just get out now, just now. How you came inside, that type only you get out from this house. Don't come again to show me your face. Savita is from a poor family and has a limp from childhood polio. This was so unacceptable. Rajesh's father also made sure his son lost the job he'd secured him at Mumbai airport. My father told that officer that I will not be secure for my son now because he is married and I have tell him to get lost from my house. Rajesh now works from home, so Savita expects him to do his fair share of the early morning chores. She is very angry with me because fire was not going on, that's why the water became very chilled. I should done it, but I want to go for bring newspaper. No, my fire is not starting. बस। My son is going to school now. Bye. 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 अदरक क्यों गया हो? Savita has a part-time job as a cleaner for a middle-class family in the city. But to earn a bit more on the side, she deals in the beach's homegrown speciality. अनिल, भाजी दे। ऐसा थोड़ी ना होता है क्या? अनिल सबको लूट रहा है 15 रुपए तल्ला देके। बस ऐसे चला 10 रुपया दिया तुमने। 20 है, ज्यादा दिखता है, चश्मा लगा ले। अभी तो लिया है 20 रुपए का, 50-60 रुपए तो निकल आएंगे इसमें। The family's main business, however, is doubling up their home as a local pub for the Methi farmers. Now already the 7:45 and the customer always come over here at whatever time they want. They comes and drinks and they go away. The only drink on offer is cane liquor. I keep the bottles over here only. But sometimes I have to hide it for cops. That's why I hide inside the bag. Rajesh doesn't have a liquor license, and his illegal business has landed him in jail once already. It is very much big risk to selling the liquor. And if any state government will see, then it will be, my life will be fucked. Too much. Rajesh has few other options, and so reckons the risk is one worth taking. Besides, right now, he has more immediate worries. There's a rumor that the local council, the BMC, are preparing for one of their periodic evictions of the families squatting on the beach. कल होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तोड़ ताड़ करके जाती है। एटीएम बोला है कि सामान भी रखने नहीं देने। मेरे बिजनेस पे भी असर गिरता है। देख लाइफ है, लाइफ प्रॉफिट लॉस एक दूसरे का तो होते ही रहता है। वो तो सही बात। लेकिन अब तेरा नुकसान होगा तो फिर मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा मैं बोलता हूँ। हाँ। तू जाएगा तो फिर मेरे को स्पेस भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उसमें तेरा भला होगा, मेरा तो पूरा लॉस की लॉस है। मैं भी रहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से रहता हूँ। पहले बहुत कम झोपड़े आते थे, अभी ट्रिपल हो गए, ट्रिपल चपोल हो गए। इतना तो तुझे मालूम है। कल नहीं जाएगा तो फिर दो जन आएंगे, तीन जन आएंगे, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर हम लोग स्पेस भी नहीं मिलेगा। और जाना तो ठीक है,
We're certainly hard-working, but having our heads down doesn't mean we're cut off. Keeping our eyes open to the world around us might just give us that all-important edge. In the jewelry district, the gold sweepers take a close interest in the global spot price of gold. A shift in value has a direct impact on their earnings, though not in the way you might expect. जाकिर भाई इतना भाव हो गया हम लोग का काम कैसे चलेगा बोलो तो कितना हाँ जाकिर आप जो बताओ এই যে 20% বেড়ে গেছে সোনার দাম এটার কি হবে এটা আমাদের জন্য খুবই খারাপ খবর সোনার মার্কেটটা ডাউন হয়ে যাবে কারিগররা ওরাও বসে পড়বে তারপর আমরাও বসে পড়বো আমরাও আস্তে আস্তে এটাকে নিয়ে আমরা মানে সাধারণ মধ্যবিত্তের থেকে তো সোনার দামটা নাগালের বাইরে চলে গেছে তারপর আমরা যে না খেয়ে রেখে মরে যাবো এটা With the price of gold at an all-time high and fewer customers for jewelry, there's far less gold dust on the streets. For Kale, this means his dream of escaping the landlord's cramped dormitory and setting up on his own has got harder still. But he has an idea and is up earlier than ever. He plans to bypass his landlord by dealing in a different kind of dirt. The gold dust washed off the goldsmiths' bodies and swept from their floors eventually ends up with all the other muck in the drains. ये ड्रिंक जो हम खोला है इसमें 7-8 महीने का पड़ा हुआ है इसके अंदर जो मतलब इसमें जान का भी खतरा होता है बिच्छू कातर सियाम पे आप कुछ भी निकल सकता है इसके अंदर जान का खतरा होता है इसमें जो कुछ भी चीज़ निकल सकता है संडास के अंदर भी से भी सोना निकल सकता है हम लोग दुनिया में आदमी कैसा भी काम करता है कोई चोरी डकैती खून कत्ल हर कुछ करता है मगर पैसे की खातिर हम लोग को ऐसा कोई काम नहीं है हमारा ईमानदारी का काम है मेहनत से कमाता हम लोग इसका मट्टी अच्छा निकल लिया एकदम जाम मट्टी है मतलब मोटा मट्टी भारी मट्टी इसमें माल अच्छा दिखेगा गाद वाला मट्टी नहीं है जो एकदम पानी पानी ऐसा ऐसा नहीं है भारी मट्टी है जानदार मट्टी है माल भी अच्छा निकलेगा और हम खुश हैं Working flat out for 20 minutes, Kale dredges enough sludge to fill 6 bags. कलकत्ता में तुम्हारा स्वागत है निकल के अच्छा लग रहा है हवा लग रहा है थोड़ा अच्छा लग रहा है मन को अंदर गैस होता है हवा लगता नहीं है इस वजह से They dredge 3 more drains before Kale and his friends call it a night. अच्छा क्या इसका माल जो होता ना वो हम लोगों की पकड़ाई में नहीं आगा इसमें कि धुलाई माल पकड़ाई में नहीं आता वो लोग जो घाटी लगाता है उन लोगों का अलग हिसाब होता है वो अलग तरीके से धोते हैं इसको गलाते हैं फूकते हैं इतना टाइम है नहीं हमारे पास हम ऐसे ही भेज रहे हैं 2 पैसा उसको फ़ायदा हो जाता है बाकी तो अपना है ही इससे भी अच्छा दिखागा अभी तो कुछ नहीं है पहला दिन है हमारा जो भी हड़बड़ी में कर रहा है वो थोड़ा देर में भी उठा इससे भी अच्छा करके दिखागा हम लोग तुम्हें To shift the night's haul, Kale makes a call to one of the large-scale refiners. कितने बजे आएगा भाई माल रखा हुआ है इधर में अबे माल रखा हुआ भी तो निकल के हटा ठीक है जल्दी आया अपन ठेके का ही माल उठालेगा हमारा ही माल उठालेगा साथ में ले आएगा ठीक है Kale's plan to cut out his landlord in the house seems set. मेरा माल निकला हुआ 23 बस्ता अभी तक मेरा यही टाइम है माल बेचने का अभी तक वो आया नहीं है खरीदार का अभी तक आया नहीं है यही टाइम है मेरा माल बेचने का अब वो आगा उससे सौदा करेगा थोड़ी बोलने में घबराहट होती है उससे कितना पैसा लगागा कितना नहीं लगागा हम कितना मांगेगा कितना लगा सकता है ये बात बोलना पड़ता है थोड़ा घबराहट होता है मतलब बात पड़ जाएगा At last,
The buyer, Javed, does turn up, but he's playing it very cool. I have to see that how much gold is present and how much today I'll gain or what I will lose. हाँ तो अभी चेक अभी मट्टी देखे कहाँ की दाम दर कर देंगे. Once Javed's happy there's gold in the mud, negotiations can begin. ना तो ये तो लेने वाला दाम बोल, यहाँ रख के जाने वाला दाम मत बोल. मैंने 8 बोल दी. हम कितना बोले? 4. सीधा डबल कर दिया मेरा. आदमी की पैजामा है. माल देख के तो पैसे बोल रहा. माल देख. 2 ग्राम लग रहा काट काट के डाला है ते. 2 ग्राम का पैसा. लग रहा था काट काट के डाला. फ्री का पैसा है ना, काट काट के डाल दिया हम लोग. तो तुमसे अबे इतने सोच समझ के देवान जी, तो ये भी 2 पैसा बचे. सोच समझ के बोलते थे लास्ट टाइम उसका बर्दाश्त नहीं देंगे. देना होगा देगा, नहीं देना होगा मत देगा. क्लियर करेगा. 5000 रुपये देंगे. बोल. तो 6000 रुपये दे. नहीं हम 6000 नहीं देंगे, हम 5000 देंगे लास्ट. हम बोल दिए मेरा जवान तो निकला हुआ जानता है. ठीक है ठीक है. 5000 कब आएगा? He is a good bargainer, but I have not paid him so much. He was expecting 10,000 rupees of this mud, but I have paid him 5,000. If we've got a good business idea, we're not the type of people to let paperwork and the law get in the way. Over 90% of our working population earn their money off the books, generating 2/3 of our GDP. Ironically, that includes selling knocked off books, something the entrepreneurs where you come from might not be so happy about. Steve Jobs, and this one Deepak Chopra, Life After Death. Meet Salman, who earns his living selling the books to Mumbai commuters. Hi sir, novels. हम लोग ये बुक्स बेचते हैं, हमको पता है इट्स अ पायरेटेड बुक, बट द स्टोरी इज रियल. अगर जब खरीदने वाले को तकलीफ नहीं है तो फिर हमको काहे की तकलीफ बेचने की. Salman works the prime retail space of this busy junction with a bunch of friends who have a strict profit-sharing agreement. फैमिली के तरह ही रहते हैं दीदी हम लोग सब दी. वो बोलते हैं ना घर में ज़्यादा बर्तन रहेंगे तो आवाज़ आएगी, लेकिन बर्तन सब साथ में रहते. वैसा हम लोग सब साथ में रहते. समटाइम थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है खेलने में, फिर एक दिन में वापस एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे का हम लोग का झगड़ा रहता है. Salman started out selling newspapers on the streets when he was 9, before spotting there were better returns in paperbacks turned out by the city's top backstreet press. If I sold this book in 400, so my commission would be 200. Sometimes ग्राहक को ज़्यादा प्राइस भी और कम भी प्राइस बोलना पड़ता है ना, और आपके जो फॉरनर तो ज़्यादा बोलेंगे ना. Sometimes like they feel like relationship है जैसे हमारे बीच में, और sometimes कुछ ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं. क्या माल था. Hi sir, novels. स्टीव जॉब हाँ बेचेंगे अपना भी टाइम आएगा. स्टीव जॉब्स बेचेंगे. छोड़े. सर स्टीव जॉब सिग्नल ही छूट गया था, मैं बता रहा था. अच्छी थी, लेती थी, नाश्ता था एकदम अच्छा. हम देखते हैं अगर कोई स्माइल कर दिया तो हमको ऐसा लगता है स्माइल कर दिया तो लाइक वो बोलते हैं ना हाथ से तो फंसे, तो वैसा हो जाता है फिर. लेकिन अगर सिग्नल छूटने वाला रहता तो हम फटाफट उनको पूछते रहे आपको कितना देना, आप जल्दी बोलो, फिर कम ज़्यादा करके फटाफट दे देते. अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारा बेनिफिट है तो हम दे देते उसमें. 200 और 20 रुपया दो बस. I sold one book. I sold it on 200 rupees. It was my first buyer. First good luck without profit also. After that I will earn more profit. हवलदार आ रहा है. बाद में आता थी. अरे माँ. Black marketeers like Salman and the gang are easy targets. They want money. They always asking for money. They will burn our books and hate us, and maybe they'll find like वो 1250 rupees सरकारी फाइन होता है ना जो. बाप की कमाई का खाते. हम लोग अपनी मेहनत का खाते हैं, इन लोग के तरह नहीं बाप का बैठ के खाते हैं. हाँ हम लोग तो मेहनत करते हैं यहाँ पे.
Salman's friend Ajay ended up here after an accident with a haymaking machine back in his village. It's not hand. Who is lucky? Oh, I don't have. I'm handicapped. Please buy from me. So many people buy from him. Ajay consistently tops the cooperative sales rankings, guaranteeing his popularity. हमारे ब्रदर मतलब तो इसके लिए हम लोग उसको बहुत देखते हैं. हम लोग के फैमिली ये सरीका मानते हैं उसको अजय को, क्योंकि हैंडीकैप है, उसका कोई भी नहीं है, ना माँ में ना डैडी को. इसके लिए हम लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं पूरे फ्रेंड लोग. अभी हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. चलो. मेरा खिलाते क्या कभी? बॉल का है. कैच है. Physically we are strong, so that's the good thing for us. ठीक है, 9 to 5 only सिर्फ एक ही सामने कैमरा कंप्यूटर में ऐसा जाना. 5x5 के केबिन में very difficult to do. Hey everyone! Good batting, Vito. Come, I'll show you where do we sleep. Salman and some of his family currently sleep in a municipal gardens next to the junction. तो ये जो गार्डन है, रात को यहीं सोते, सामान अपना यहाँ रख देते, जो भी है बिस्तर और पकाने का सामान, खाना वाना. चलते रहे ऐसे, मैं यहाँ से लेके चलते रहे. Yes, it is tough because many difficulties like municipal people comes and they just throw your everything, just stone all that. So it's very difficult to live on the street also. She's my auntie and my cousin, Sabbu. So we all live together and we all stay together also over here. All the people used to sleep here every day. So it's... My mom was calling me. While Salman mainly sleeps out, close to his work, his mom lives at home just outside the city. Like moms everywhere, she worries for him and his future. My ambition is, I wanted to go in a defense side, in Indian defense, like Navy or Army. But my another aim is, my ambition is to start an NGO which work with underprivileged children. So I wanted to start an NGO also with these kids, those who are living here with me and my friend also. He's my cousin's son. Yeah. We all live together, stay together. Because एकता में ही बल है. Good night. चल बाबा. Good night. Let me take you to a secret place across the mighty Ganges. On this abandoned riverbank, hundreds work in an underground yet highly organized industry. Welcome to Kolkata's very own Gold Rush. This is where Javid's brought the drain sludge that he purchased from Kale in the jewelry district. He and his family are major players around these parts. This is my casino. I gamble there every day, but I never know that how much gold I will get. Come, I'll show you. Javid's hopes of transforming the sludge into gold hard cash relies on the skill of his 20 employees. He is my best friend, Raju, and his real name is Raju. Asli naam kaha? Jahil Khan. His real name is Jahil Khan. He is working since 12 years. His name is Noor Alam. He works less, but he busy always in phone with his girlfriend. Always, hello, how are you? I love you. All that things, etc., etc. He is lazier than him. बोलनी हाँ, तू उनको तो खराब भागेगा काम में. Hello me, है ना उन्हें जैसे तैसे मार देना उतना. Before the gold can be extracted, the sludge must be prepared. All these muds are again drying. After it will dried, it will goes there. The sieving is supervised by Javid's father, Abdul, head of the family firm. पूरा गेज.
हाँ धूप लगी. The only mechanized phase of the process follows. Its name is roller. To make the mud work well, we have to grind very well. See, this is very good fine powder. The finely ground mud is ready for Javid's casino. This labor-intensive wooden sluice technology is straight from 19th century California, using water hauled by hand from the Ganges. When conjuring gold from mud, there's no beating the human touch. तो यहाँ हम पानी गिराएंगे ऐसे, पानी के साथ गर्दा सब निकल जाएगा, माल जो है यहाँ बैठ जाएगा. तो ये जो स्क्रैप है, स्क्रैप में माल फंसा हुआ होता है. खूब आराम से सीलो हाथ चलाना पड़ता है, जैसे लगता है किसी का बॉडी हम सहला रहे हैं. ये हाथ तक का जो हुनर है हम लोग जैसे कर लेंगे और कोई नहीं कर पाएगा. इसी वजह से इस हाथ से हम किसी का मसाज भी कर सकते हैं. A vigorous brushing dislodges the precious sediment from the grooves in the wood. This mud is from 30 bags. It is less from my expectation. After the washing, we add some mercury, some glass and some soda, ash. After making the balls, we melt in the crucible. Air is blasted into the charcoal-fired crucible to force up the temperature and drive off any impurities. All the goods, ranga, or you may call it mercury, presents gold, comes down. It's too hot. See, this is the thing I was waiting for. The solidified ranga balls are then heated to an even higher temperature in a handmade oven for several hours to burn off the mercury. अभी तक हमें फटल हुआ गर्मी से. Very hard work, very hot work. Smoke is very harmful for us. By doing this, I get lots of gold. I love this process very much. A small disc of alloyed silver and gold is all that's left. Javid's brother Nabil refines it piece by piece using nitric acid. जब चांदी सिल्वर और गोल्ड अलग कर रहा है इसको. A final smelting produces, at long last, pure 24-karat gold. हम लोग इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं. After the whole process, pure gold. The big one cost 54,843 rupees. A very huge amount of mud I have washed. 350 bags I have washed for getting this gold. Who doesn't like gold? Everybody likes the gold. Earning cash is always the top priority, but making a home is also crucial. It provides the stability we hope will nurture the success and wealth of the next generation. On the beach in Mumbai, today is Rajesh and Savita's wedding anniversary. It's 9 years since they moved here after their controversial love marriage. And even though money is tight, Rajesh is determined to buy Savita a present. I have borrowed the money from some of my one friend, and now I am going to buy a sari for my wife. Till my pocket in I am having 2,500, but till 2,000 I will take an sari. This one is nice. Whatever color I take, she likes it. She never refused till now. Her favorite color it is. Just I will hide the sari. Splashing out on a new sari means that Rajesh needs more credit to restock his pub. He drops a call to his local moneylender, who he already owes a substantial sum. तुझे तबीयत नहीं ठीक है यार, तू मार मत, हालत खराब है. क्या करेगा? I have to pay 70,000 rupees, and per month I am giving interest 5,000 rupees.
₹1000 मैं तेरा पहले निकल जाए तेरे कार्ड में से. The moneylender relents and lets Rajesh extend his loan. Failing to keep up his repayments now would have serious consequences. Some money lender take the children, they keep the children for 2-3 days and within 2-3 days they ask the money return back. तो सबको होती है परेशानी, पैसे देने पड़ते तो जान पे आता है. Rajesh now desperately needs to get the pub back up and running and stimulate some cash flow. Once dusk falls, he can safely make his rendezvous with his illicit liquor supplier. Today night I am going to buy 148 pieces are there in one box. Sometimes the profit is still 400, 500. Sometimes the profit is 200 also, 300 also. No perfect. I always buy from this guy only, my friend only. I don't go to any other shop or any other person to buy. Word has already got out that the best value bar on the beach is back in business. Rajesh's strategy is to corner the no-frills end of the market. The people come here because we give them the water to sit the place and glasses also we provide. With the customers having drunk their pockets dry, Rajesh calls time at the bar so he can present Savita with a surprise. नऊवारी दिसते तुला? या छान नाही साडी. आवडली का? चांगली आहे? हां? की नाही? मम्मी चांगला आहे दिसते. हॅपी बर्थडे टू यू डिअर मम्मी डिअर पापा. Happy anniversary, wedding anniversary for both. Day. But such harmony on the beach could be short-lived. The residents of new luxury apartments want squatters like Rajesh moved on, and they're not alone. Methi farmer Anil's family built illegally themselves when they first arrived, but they've since been given the right to remain, and the growing competition over space explains their antipathy towards newer arrivals. मैं सोचा था कि अब अरुणाचल चला जाइए तो यहाँ और ये अकबा और ये रच के और बढ़ा के मेथी और रची बढ़ा दिया जाए, वो जगहियाँ कम रही. वो आएगा धमकी देगा, मारने का धीरेगा कि तुमके मारेगा, ऐसे से हट जाओगा तभी लोग हटेगा, नहीं कंप्लीट करेगा तो नहीं जाएगा. ये वर्षों वाला आया ही आग लगाई दी है तभी वो लोग हटा है और हटने वाला वो लोग नहीं है. Kale is still in the room he shares with 15 other gold sweepers, all under the control of their landlord. रोने लगेगा, कोई बात से रोने लगेगा. अबे तो सही तो बात है, गिला ऐसे गिला तो बुकट पड़ जाएगा. But he's just heard about a room that's come available nearby. Perhaps this is the moment he's been waiting for to make his escape. चाचा, ओ चाचा, हम घर कमरा को बोला था नहीं, घर देखने आया हूँ. घर देखने आया था? हाँ. चलो दिखा. यहाँ है बाथरूम, यहाँ है बाथरूम. ठीक है चाचा, बाथरूम सही है, ठीक है.
ये है घर, ये है घर। और ये समूचा मिल जाएगा। खाना वाना भी इधर पक जाएगा बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से। इधर में खाना पकाएगा, खाएगा खूब आराम से, मस्त रहेगा, एकदम सोगा पड़ेगा अपना आराम से, कोई टेंशन नहीं। 2000 भाड़ा लगेगा। 2,000 rupees a month isn't unreasonable, but on top of food and other outgoings, it's well out of Kale's reach. Somehow, he needs to radically improve the returns for his drain sludge. Down at the sludge refinery by the Ganges, the workers turn up at first light. Well, their boss Javed can enjoy a more leisurely approach. हीरो आ गई, हीरो आ गई। ओए टांग दे। First things first, breakfast. तो ले हमको पूरी। का गुर्दो ले का। कल लेके हम बुझवा दे। तू बासी खीरी खा करे। तो मुलुक से आगे नहीं ना। I'm calculating that how much I have to pay the worker because today is the paying day. इस्तियाक, राजू, नूर आलम भैया, लाल पैंट पहनले बगल तब बहुत टट्टी लगा था। कौ दिन काम बा? अतवार के नागा, फिर बुध के नागा ना, मंगल के नागा। क्या करो तो ले? अब काम का जाए, माल दो ओके, माल दे दे। Now I'm feeling very sleepy. I need to sleep. जावेद मेरा लड़का है, वही काम मेरा ठीक से संभालता है। हमारा लड़का मट्टी धोने में सबसे बेहतर है। लेबर लोग को अपना साथी के तरफ, अपना घर परिवार के तरफ लेबर लोग को रखता है और काम भी सब बढ़िया से करवाता है। और जावेद भाई जब सोने चले जाते हैं तो हम लोग का हंसी मजाक बढ़ जाता है, बहुत मज़ा आता है उस टाइम। जावेद भाई इतने आराम से सोए हुए थे, अगर जो वो उठ जाएंगे तो हम लोग के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। Kale has come down to the refinery with fresh determination after seeing the room. थोड़ा माल का सैंपल लेके आया था दिखाने के लिए, दरोगा को दिखाने के लिए। देखता माल का क्या दाम लगता है, डील हुआ नहीं। देखने के बाद बढ़िया तो चाहता अच्छा अब मिले और कुछ नहीं। He's realized that as a newcomer to the drain sludge business, he must play tough if he's ever going to be paid a fair amount. See, here is the gold. See, it is not so good, but it is okay. 250 रुपये हम देंगे, ठीक है? क्या सबसे ज़्यादा 250 रुपये? तो क्या लेगा बोल, ठीक से बोल। 8000 हम लास्ट बोल दे, उसका आगे हम देंगे नहीं। अब तो ही बता दे। 7000 देंगे। वे हंसरी है। पक्का बिजनेसमैन जैसा सोच रहा है। हटा। हंसने की बात कर रही हूँ मैं। जा 3000 रुपये ले लेगा, जा। दे मन को। अरे तुमको खर्चा नहीं है। वो तेरा खर्चा तो लंबा चौड़ा है यार, खर्चा तो सबको ही होता है। आगे 3000 रुपये देंगे। हाँ तो बस छोड़ दीजिए उसको माल को, नहीं रख लेंगे। तो ठीक है, कब उठाएगा मट्टी? भाड़ा ले लीजिए, भाड़ा कितना देगा? हाँ भैया। हम आदमी देखने जा रहा कोई से भी जो माल दाम का दाम अच्छा दे सके, हम इसको खोजने जा रहा। Sometimes I win, sometimes I lose. Normally you can see that I win. There's a mounting panic among residents of the beach in Mumbai. There's word that the council are serious about their eviction threat and are sending over the bulldozers. The thing is that today BMC is going to come, so everybody is in worried that what will happen. See there, that side some guys are dismantling the house and they are keeping there only. But Rajesh has seen it all before.
When it will come, then only I will dismantle. If they will not come, then I will not dismantle. Faced with the risk of losing everything, most people aren't taking any chances. अभी इलीगल बोले तो सभी चीज़ आज की डेट में क्या इलीगल नहीं, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं इसलिए हम लोगों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते. One of the council's security guards is an old customer with no qualms over ordering a drink from the illegal pub. He's not convinced by Rajesh's preparation and tips him off that this time the eviction is for real. I am feeling very bad now. The message has come that within 1 hour they will be reaching to your house. हाँ? त्याच्यात नको टाकू ते लक्ष्मीचा फोटो छको. बाबू हट ले. Rajesh has an added problem. Cops are standing over there. Now I am in some tensions. If the cops find his booze during the eviction, he would quickly end up back in prison. I have to hide it somewhere else. If police will see, then it will create lots of problems. Luckily for the future of the family's home and possessions, Savita's rushed back from her job in time to help. इधर मैं नहीं टेंशन लेके थोड़ी कुछ होने वाला है. सगळं सामान पार इथून ते टाकी जशी का आपल्याच बापाची. Unlike Rajesh's upbringing in a middle-class apartment, Savita grew up in illegal settlements. इधर मार चल ये घुमा दे. ये अंडरपैंट वगैरह कौन सुखाता है इधर? मोठे नंतर टाका, पहिला मार के टाका. नको त्याच्या खाली रश्या तर टाका. माझ्या चप्पल पण तुझली. The moneylender approaches on his daily round. तेरे को बोला था ना भाड़े का शर्ट निकाल के रख देना और लॉन्ड्री में से लाके देना. देना तू पैसे वो देना. उसमें से देते ना फिर आज. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो दे दे. मैं बाकी का जिस दिन ला रहा ना उस दिन तुरंत ले ले. मैं बता देना. पैसा देता है, बात करता है, फिर तेरे को फोन करके बता देता है डेट. बुलडोजर भागो बाबू से भागो. It's feeling very worried that what will happen now. If anybody goes and rush them, then they remove sticks and beat it them very hard. निकालो चल. Just don't show the camera. Otherwise cops will catch you. घर का नहीं ऊपर चढ़ा रहा है क्या? चंदू था नहीं, चंदू को परेशान थी. चंदू गई ना. चंदू घर में बाबू ने बनाओ थोड़ा रूम काली से. तो मामी तो छुट्टी को निकाली बना दी. अकेले परेशान थी. जैसे कचड़वा भरा है. हाँ तो सही है. चैन वाला रहता तो सब ले भी. In just 2 hours, the houses of 40 families have been reduced
to a jumbled mess. Kale, in the jewelry district, is again using the brief hours of quiet in the middle of the night. काम भी अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। क्या बोलेगा, काम करना है तो खराब है, नोट अच्छे कमाते हैं तो अच्छा है। He's confident he's found a buyer who will pay properly for the sludge. अंदर से आवाज आ रही है बिल्ली की। बारी लगा हुआ है। अब जो कल एक लगा वो निकलेगा, वो अलग निकलेगा। परसों हम निकलेंगे, उसके बाद काम एंड कर देंगे, हमारा काम शेष हो जाएगा। ये तो चेला है हमारा, चेला गुरु हम इसके। जो मट्टी ज़्यादा काला होगा तो उसमें माल निकलता है। हमें पूरा 30 बस्ता करना है आज में। 30 हो जाए 25 हो जाए भर देंगे आज में। 4 बजे तक अपना पूरा काम खत्म कर देंगे। Kale has a new plan to strengthen his bartering position. Instead of letting the buyer come to him, he'll take the sludge to the buyer's own turf. 3 ड्रिलिंग में 30 बस्ता निकाला हम, हमारा काम खत्म हो गया। अब जा रहा हम सीधा टैक्सी लेने। टैक्सी लेके जाएगा गंगा घाट माल डालने के लिए, और सुबह में 10 बजे करीब हम माल बेचने जाएगा। अभी डाल के आ जाएगा 1 घंटे में, आधा 1 घंटे में। जल्दी जल्दी हम इसमाने कर दिया कि हम जल्दी माल लदा के यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि वो शिवपुर से निकल जाएगा। इसमाने टैक्सी हम जल्दी करा, टैक्सी करके अब सीधा माल लेके जाएगा। अरे तो माटी है ना, 15 बजे देखने से नहीं ना होगा, तो उसमें आएगा ही नहीं। उतना गाड़ी पूरा बढ़ जाएगा, जाएगा कैसे? अरे तो कुछ एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। पैसे से क्या नहीं होता आजकल। ठीक है बेटी, आना लड़का। आओ एक चप्पल पहन लूँ। चलो भाई, पैसा कितना ही बोलेगा, इससे देखो क्या पड़ता है, वो क्या लगाता है। हम तो वैसे 10,000 बोलेगा, 10,000 बोलेगा। अब इसमें देखते हैं क्या वो लगाता है वो। The race across town has paid off. The new buyer Akbar is still present. इसके ऊपर चढ़ा के डालता है। But will he offer more than the 5,000 rupees Javid paid for this similar amount of sludge? ये एक दूसरा लड़का गिराया। नया लड़का? हाँ, नया लड़का। बस खुल गया वाला, वो खोल ले, देख लेगा, ऐसे हाथ मार के बोल देगा। हाँ, 10,000 दे देंगे। 10,000 देगा भाई। 10,000? अरे यार सोचो, अगर 10,000 बचेगा तो आप नहीं, माली तो बहुत भाई, 30 बस्ता है, वो खटनी है, सोने भाव देखो कितना है। अच्छा 5 कर देंगे? हाँ दे देना 10,000। अरे हम 5,000 कर देंगे, आगे आपका मर्जी, कब करने होगा बताओ। नहीं होगा। अरे देखो भाई, अगर हमको एक रोटी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? हम लेंगे माल पिसाई करेंगे। 4-5 आदमी लगा, हमारा क्या पोसागा ये बताओ। ज़्यादा नहीं, 7,000 कर देना, छोड़ जाने दो। चलो ठीक है, 7,000 डन। 7,000 में हम लोग में बात होगी। हाँ पक्का? काम में होता ठीक है, ठीक है। 7,000 का माल बिक गया, पैसा हाथ में आ गया, बहुत खुश हूँ। और बेचेगा अपना, सब अच्छा हो जाएगा। और 2 लड़का और लगा हुआ, इनको भी कुछ दे देगा, थोड़ा बहुत सा पैसा बाकी अपना, टेंशन नहीं है। मन खुश एकदम, सुकून शांति है यहाँ पे भी। On the beach, everyone is busy rebuilding their homes in the exact same position as before yesterday's demolition. The cops didn't find Rajesh's booze, and his dismantled house survived unscathed. Rajesh himself has been off helping some friends, leaving Savita to reconstruct their home alone. She is not in mood of talking because I was not here, no. काय आता मगाशी लोकांनी फोन केला तेव्हा मी निघालो ना तुमच्या घरात. लेकिन वो टाइम पर आता नहीं है ना, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। वो उसका हमेशा है, आदत हो गई है। But there's a priority neither can afford to ignore.
Before the walls are even on, the pub is back up and running, providing the income so crucial for servicing their debt. I know it very well, my wife, so I am not scared about her. It will be a little bit shouty. After that, it will be silent. In everybody's house that is going on. काय? प्रत्येक नवरा आपल्या बायकोला घाबरतो, कळलं ना? फक्त फरक एवढा आहे की तो तोंडावर दाखवत नाही. काय आणि तर बाय खरं की खोटं आहे? She is my life partner, so she is not my biggest headache. Biggest headache is BMC. Now Carl is getting a better price for his drain sludge. Renting a room may be within reach. वहाँ से निकल के इधर में आया गया कहते हैं सुकून शांति नहीं, किसी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी से कुछ बात नहीं होगी. He's taking his dredging friends along for a second viewing of the place offered at 2,000 rupees a month. बड़ा है, इधर सही है. सही है. अंदर सही है, थोड़ा दुकान में मिलेगा 2,000 में. ये अलमारी पलंग सब दे जाओ. तसले तो लिया करेंगे साइड में इधर. और में तसले करके कोने में तसले मालाल जमा हो गया इधर सोफा जाएगा करेंगे, ठीक है ना. घर में से थोड़ा साफ सफाई करना पड़ेगा. हाँ, वो सबसे हो जाएगा सही. हाँ, बढ़िया हो जाएगा. उनसे क्या कितना पैसा बोलो? 1000 रुपये ले लो. नहीं होगा 1000 रुपये में. 16 से एक पैसा नहीं कमती होगा. चलो 1500 रुपये लेना, ठीक है? नहीं देगा. 1600 देना लीजिए ना तो छोड़ दीजिए. ठीक है 1600 देंगे पक्का. अच्छा 1600 में बात पक्का हो गया, ठीक है? सही सही है बोल. ये भी सही जगह. हम लोग 5, 6, 7 आदमी रह लेगा आराम से. हमको 3, 4 आदमी हम लोग इधर सो जाएगा. 3 आदमी इधर सो जाएगा हम लोग. बहुत खुश हूँ, ये कमरा मिल गया. टेंशन दूर हो गया एकदम. फ्री एकदम. बहुत खुश हैं हम एकदम, बहुत खुश. And on the beach, there's a new contentment too. The BMC like to flex their muscles occasionally, but attention has now moved on. यहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं. अभी यहाँ पर बुलडोजर ने अभी हम लोग बहुत खुश हैं. For Rajesh and Savita, life on the beach is never going to be easy. But as adaptable, resourceful survivors, they will always be able to provide a home for their family. And with that comes hope for a better future. My dream is that I will build one day my permanent house. Once I will get then some little but support for my business, and then I will take one permanent house for myself and for my children also. That is my dream.